Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you to the live stream on zbit.com and on YouTube live streaming as well. It's the start of my live session, and what a last 24 hours we've had, right? We've looked at a drastic fall in the price of BTC. We have seen how the market is coming crashing down, from 76 200 300 yesterday. It looked like it was maintaining its position, but Bitcoin has fallen to well below 70,000. It's now at 65,000, and all the predictions and the foresight are pointing towards a fall to even further dollars, right? We'll have to see till where that falls, but all the predictions, इतना सारा कंटेंट हम देख रहे हैं बिटकॉइन के आसपास, मार्केट क्रैशिंग के आसपास, कैसे ये मार्केट से जो डेरिवेटिव्स है, और जितने भी क्या कहते हैं मार्केट में ये डेरिवेटिव्स है, क्या कह रहा था मैं, जितने भी मार्केट में आप लिक्विडेशंस देख रहे हैं, जितने भी मार्केट में से लेवरेज हटा जा रहा है, वो सारा इवेंचुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द फॉल ऑफ BTC, राइट? It's going through a you know massive ordeal, you can say. It's going through a massive fall, and it's not looking good. Obviously, the price will eventually get better and it will rise in the times to come. But for now, the predictions are all coming up from different experts, from billionaires, from CEOs, from all these investors, big investors, and big whales, as to where this fall will eventually stop. So we don't know where it will stop, but we look to get into this topic of why BTC is crashing. Yesterday as well, I was keeping a close eye on the price of Bitcoin, and today as well, we are going to have to keep an eye on BTC, because it is the need of the hour, because the market is crashing so much, it is falling so much. It's in such a bearish state right now, bearish pattern, bearish mood right now, that all you have to do is just keep an eye on the market and just probably go short all the time, right? That is what it looks like. Not just BTC, the prices of other altcoins as well, Ethereum as well, have fallen quite a lot. Ethereum also, it's had its own journey. I remember those times when I bought Ethereum myself. I bought it at somewhere around $3,300, right? And today, look at the situation. Ethereum is at less than $2,000 now. Yesterday, it was somewhere around the 2,000 mark, 2100, 2090s. It was kind of maintaining that position, but as expected, there was a fall in the market, and that fall has brought it down to less than 2000, 1900 के भी नीचे आ गया है अब. और वही बात है भाई, कहाँ रुकेगा ये अभी किसी को समझ नहीं आ रहा. वो कहते हैं ना कि डिप बाय कर ले करें. So it's very difficult right now to predict whether to buy this dip, or whether this is the final dip or not. How long, how much more long will the market keep crashing, ये देखना पड़ेगा हमें आज. तो इसी के साथ वेलकम अंगद यादव टू द लाइव स्ट्रीम. इसी के साथ आज की लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे हम, और हम देखेंगे कि कैसे ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट भी, क्योंकि देखो भाई, वो मेरे आज के लाइव सेशन का सेकंड टॉपिक होने वाला है, ईरान यूएस वॉर. जो मतलब ऐसा लग रहा है सारे फैक्टर्स एक साथ ही मार्केट पे आके टूट पड़े हैं एकदम से, और ऐसे में मार्केट को हम मतलब ये बोल सकते हैं कि मार्केट में बहुत फियरफुल और बहुत ही अनसर्टेनिटी का माहौल है. काफी सारे मैंने आर्टिकल्स जो है वो कॉइन डेस्क पे भी पढ़े हैं,
जो ये पॉइंट कर रहे हैं कि इस दौरान जो फियर फैक्टर है वो अपनी मतलब बिल्कुल चरम सीमा पे है, जितना पहला शायद एफटीएक्स के क्रैश के दौरान हुआ था ना, आज मार्केट ऐसा लग रहा है कि उसी स्टेट पे पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जिस बंदे ने ये प्रिडिक्ट करा था कि 2007 में 8 में रिसेशन आएगा और मार्केट क्रैश करेगी, भैया उस बंदे ने भी ये इसी तरफ पॉइंट आउट करा था अभी थोड़े दिन पहले, और मार्केट में सारे आसार जो है ना वो उसी हिसाब से प्रोग्रेस करते देख रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है बिटकॉइन कितना क्रैश क्यों कर रहा है और कब तक करेगा। ठीक है, कर रहा है वो तो दिख रहा है, चलो आप, हाँ आप देख रहे हो कि मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितना गिरता जा रहा है, कहाँ ये रुकेगा, ये सब हमें किसी को नहीं अभी समझ आ रहा है। मार्केट बहुत ऐसे तरीके से इस वक्त काम कर रही है जहां पर जो हिस्टोरिकली जो चीजें रही हैं वो भी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, हमें हेल्प नहीं कर रहा है ये बताने में कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा। क्योंकि there have been predictions wherein people have said that it will crash till, not just people, companies have said that it will crash till $38,000, पर अब आप देखो तो कोई प्रिडिक्शन ये भी है कि $26,000 पे जाके रुकेगा बीटीसी। तो ऐसे में आप कैसे ये अनुमान लगाएं कि मार्केट कितना और क्रैश करेगा, वेदर आई शुड गो, मतलब अब बिल्ड होना स्टार्ट होगा यहाँ से या नहीं होगा, पोर्टफोलियो बढ़ना शुरू होगा कि नहीं होगा। लिक्विडेशन बहुत हाई हो रही है इस दौरान भी। तो हम ये सारी चीज़ें आज देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट का भी एक बहुत मेजर एक आज न्यूज़ सुनने में आई है कि यूएस ने कह दिया है अपने सिटीजन्स को ईरान छोड़ने के लिए। तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि वी आर वेरी नियर टू द स्टार्ट ऑफ द war between Iran and US? Because it looks like things are going to get very ugly in the next few days, if that war escalates and if all these things happen. Will it contribute to absolute bloodbath in the crypto industry, in the market, crypto market? ये भी भाई, ये तो ऑब्वियसली है, वो भी होगा। क्या वो भी और ये भी फैक्टर्स एक साइड साथ कंबाइन करके मार्केट को और नीचे लेके जाएंगे? 50,000 तक जाएगा क्या बीटीसी? कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, वेरी वोलेटाइल मार्केट राइट नाउ। ये है कि भाई सेलर्स जो है ना वो इस दौरान फुल डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ऑन दैट नोट, अहमद यादव जी आपका कैसा चल रहा है? कल कुछ आपने ट्रेड करा? सिंस यू आर लिसनिंग, yesterday as well I was bearish, today as well I am going to be bearish. 65,000 से तो डेफिनेटली मेरे को मार्केट जो है नीचे जाता ही दिख रहा है और ज़्यादा। देखेंगे बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है। we'll keep a close eye. Welcome user 474428. I welcome you to the live stream. It's an absolute pleasure to have you here, and I hope that you will be here with me throughout this live session. I do have a deposit offer as well with me. So if you want to deposit, and start your cryptocurrency journey on zBit.com, I will share with you the giveaway offer in the next few minutes. Stay tuned, and I will be, beginning this live session and beginning, telling you about the giveaway offer that I have as well. Stay tuned. We have a lot in store for today. Plenty of things that we need to look at when it comes to the Iran-US conflict escalating and the price of Bitcoin, which is actually free falling, like the topic of my live session actually is self-sufficient. It just says what the market is looking like. So stay tuned, and we'll be beginning with the topic of the day and the explanation part that I will begin with in the next few minutes.
So this is the news article that is very important to look at, because it conveys a very big factor that is playing its role in this current market, in this current slide of Bitcoin. And it is saying that this market sentiment has reached to a point of a lot of fear, and a lot of what was earlier cautious approach, now that has shifted to an outright defensive approach uh, in the market. So this kind of levels of, now there are various indicators and various indexes. One of them is the sentiment gauge, right? And that has sunk. The crypto fear and greed index has fallen to 9, and it conveys the fact that this kind of indicators only come alive, or historically they've only been seen when there have been major breakdowns, or break in confidence, or the market sentiment is really low. So it just conveys about what kind of mood the investors now actually have in the market. uh, it doesn't state where the market will head towards, but it does show that the market has returned to the kind of fear typically reserved for systemic events, big events, right? And I feel like it is a self-explanatory article when it comes to, even if you read the headline only, you will understand that it is very much a situation that is big, is volatile, is fearful, making people fearful, investors fearful, and it doesn't reflect uh, you know that the market is looking for a revival anytime soon. Um, until this index keeps getting better, we read that it was somewhere around 12 a day earlier, 16 last week, and 42 last month. So over these last 3 2 3 4 weeks, this has actually come down rapidly, and it means that today we are standing at 9. It will it get better, or will it get even worse, or fall even worse? But it just signals extreme fear, as you know sellers dominate in the market, and you see more of red and less of green in the market. So that is how the market is looking like at the moment. Meanwhile, I will be making some kind of trade as well. Now I'll enter at 65 100, and I'll open short. Right, I've placed my bid, and now I will be waiting for BTC to come down further. My position is now not in the open order, it has come to positions.
a few, green bars, green candles now being seen. Welcome to user 136909, all the way from Indonesia. I welcome you to the live stream. I hope you are keeping a close eye on this. The price of BTC in the last couple of days, BTC has fallen well below, it's fallen around 50% almost, not 50%, but like 35, 40 to 45%, since it even reached to 97,800 in the last few days, but now it is currently trading at 65,000 and nearby. So the market is in a very bearish state of affairs. It is looking more and more that it will dip even further. We are going to be keeping a close look on the market, because we have anyway been bearish in the market, and so we'll be looking at how the price of BTC actually fluctuates. We'll be hoping that the market falls even further because that will benefit our trade. I will also be making a few trades when it comes to ETH, and the price that I look at the 60-minute chart, the highest, I mean, 1906. I think I'll go down from 1908. Lowest has been 18. Zero, three, four, and I'm open short. If you look at the biggest gainers and losers as well, see, most of the coins have seen a bearish state of affairs. ज्यादातर कॉइन गिरे ही है अगर आप देखो, और कम भी नहीं, 10 10 12 से मतलब 12 मैक्सिमम है, 12 10 10 9 9 8 8 7, ऑलमोस्ट 7 8 10 11 12% सब गिरे हैं। और इट इज वेरी bearish market, dominate कर रहे हैं sellers अभी इस वक्त, and therefore there is a lot of red candles and less of greener candles in the market. You can see for yourself. रेगुलरली मॉनिटर करता रहूंगा मैं अपने ट्रेड्स को, और भी ट्रेड हम बीच बीच में करते रहेंगे. Look at Solana as well. Yesterday it was somewhere around, the 90s. Look at where it is now. It is around 80s. तो काफी चीजें हैं. 60 मिनट पीरियड में हाईएस्ट इसका 80 गया है, और लोवेस्ट जो है इसका 78.9 है. 4 आवर पीरियड में भी 80 गया है, और लोवेस्ट जो है इसका 70 मिनट में लोवेस्ट जो है 96 गया है. We will again go short 79 point.
0.83 का हम 4 तक चले जाते हैं और 25x की जगह वी कैन गो वेरी Welcome to user 2766 and welcome to user 238689. हेलो सर, हेलो भाई, हेलो, क्या हाल है? क्या चल रहा है मार्केट में? हाल आपका लिक्विडेट तो नहीं हुए? मार्केट बहुत ही बेरिश रन से चल रही है। आप लोगों का कैसा चल रहा है जरा बताओ मुझे कि आज किसी पॉइंट लगाए नहीं लगाए? क्या चल रहा है बॉस? वेलकम यूजर 846936 टू द लाइव स्ट्रीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं बीटीसी के प्राइसेस को, सोलाना के प्राइसेस को, और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में क्या चल रहा है। पर बीटीसी मेन हमारा आज हाईलाइट बना हुआ है, क्योंकि बीटीसी तो बीटीसी है। और दूसरा आप देख ही सकते हैं क्या चल रहा है मार्केट में भाई। मैसिवली फॉल आ गया है मार्केट में, बढ़ने के चांसेस हैं फ्यूचर में। अभी ये डी लेवरेज हो रहा है शायद, या जो भी हो रहा है, लेकिन ये फेज जो है वो बहुत ही खतरनाक फेज चल रहा है इस वक्त। सरवाइव कर जाओ इसको किसी तरह, उसके बाद होपफुली फ्यूचर में बल्ले बल्ले होनी है। अभी तो फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा यूजर 276611 की आपका क्या चल रहा है? क्या आपने कोई ट्रेड करा आज? आर यू अ न्यू यूजर, नए डिपॉजिटर हैं या ओल्ड डिपॉजिटर हैं? न्यू या ओल्ड? डिपॉजिट ऑफर का इस्तेमाल करा नहीं करा? गिव अवे ऑफर चल रहा है पहले डिपॉजिट पे आपके, उसको यूज करा नहीं करा? देखो भाई, मार्केट फिर गिर रहा है, प्रॉफिट फिर बढ़ रहा है, ये देखो। मैंने एंट्री ली है बीटीसी पे 65030 पे। 40 डॉलर का प्रॉफिट सीधा सीधा बीटीसी पे। 65 66 डॉलर का प्रॉफिट सीधा सीधा इथीरियम पे, बैठे बैठे। 5 मिनट पहले गया हूँ शॉर्ट। 5 मिनट भी नहीं हुए सही बताऊं तो यार। ये 4 आवर देख रहा हूँ मैं, सॉरी, ये देखना है हमें। भाई बैठे बैठे $200 का प्रॉफिट। इजी पीजी, इजी पीजी। इथीरियम पे $100 का, इथीरियम इज फॉलिंग लाइक क्रेजी। ये देखो भाई 1883 पे चला गया, मैंने एंट्री ली है 1903 पे, और बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्री ली है। यही इसका ही फायदा मिल रहा है। $100 होने वाला है प्रॉफिट, $90 तक पहुंच चुका है। ये देखो, ये देखो।
एट द मोमेंट बेरिश इज द वे टू गो। किकिश जे, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे ब्रदर। आई होप यू हैव मेड द मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट ऑफर एंड यू हैव डिपॉजिटेड फर्स्ट टाइम ऑन zbit.com। अगर नहीं करा है तो बता देता हूँ, मेरी तरफ से आपको 20,000 शिबा इनू और 20,000 पेपे, इनमें से एक बिल्कुल फ्री मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पे। आपने अगर कभी भी डिपॉजिट करोगे पहली टाइम तो इस ऑफर को यूज कर लेना। 3 या उससे ज्यादा डॉलर आपने डिपॉजिट करने हैं, उस पे आपको मिलेगा मेरी तरफ से 20,000 पे या 20,000 शिबा इनू। अपनी यूजर आईडी बता देना, तुरंत आपके बैंक अकाउंट में, आपके जीबिट अकाउंट में मेरी तरफ से 20,000 शिबा इनू या 20,000 पे बिल्कुल फ्री। अब आगे बताओ क्या चल रहा है बीटीसी में, आपने क्या क्या डिपॉजिट, आज आपका क्या फायदा हुआ नहीं हुआ। ये देखो भाई, ये आया क्रैश एक और। इथीरियम तो भाई $100 का प्रॉफिट इन विद इन लेस देन 5 मिनट्स टू बी ऑनेस्ट। और बीटीसी भी देखेंगे, दिस इज अ 1 मिनट चार्ट, ये थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, $40 का इस पे भी हो चुका है। बट इथीरियम, माय गॉड, द फॉल दैट इट इज हैविंग, even worse than that of BTC. User 276611 and user 764433, welcome to the live stream। किकेश भाई वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। क्या चल रहा है आपका, कोई आज ट्रेड करा नहीं करा, बताओ जरा। मार्केट में फिर से एक राइज आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वी विल वेट, वी विल वेट। वेलकम यूजर 169344, ऑल द वे फ्रॉम इंडोनेशिया, स्वागत है आपका। वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। आई होप यू आर लुकिंग एट द नंबर्स ऑफ इथेरियम एज वेल एज ऑफ बीटीसी। It's a very dire state and the market is in a very bearish mood right now. It has fallen to well below 65,000 as well. लास्ट फ्यू डेज में भाई साहब हिस्टोरिकली अगर आप देखो ये सारी चीजें, इमेंस फॉल आया है मार्केट में। कहाँ 97,800 तक को भी छू के आया है अभी 3-4 हफ्ते पहले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे उसके बाद से लेके अब तक जो फॉल आया है ना भाई मार्केट में, वो तो भाई देख ही सकते हो, मतलब है ना। डेवोस में उनकी स्पीच के बाद से जो मार्केट में गिरावट देखी है हमने, उसका तो मैं जितना जिक्र करूं वो कम है ना। कहाँ लोग सोच रहे थे कि ये 80,000 के पास स्टेबलाइज करेगा क्या, फिर कहने लगे 75,000 के नीचे जाएगा क्या, फिर 70,000, 65,000, एक ही दिन में 75 से कल ही भाई, कल 66 था, 76,000 पे था कल बीटीसी। देखो आप 65 के भी नीचे आ गया, 60 तक भी चला गया था ऑलमोस्ट भाई। तो ऑल्दो मार्केट में डेफिनेटली एक टाइम आएगा, अभी आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई डिप आया हुआ है, क्योंकि काफी लोग इस दौरान अपॉर्चुनिस्टिक डिप बाइंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और काफी लोग सेल ऑफ भी कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है इससे नीचे शायद ना जाए। पर इस वक्त प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इट्स सो वोलेटाइल दिस मार्केट राइट नाउ। अभी देखो, अब आपके आंखों के सामने आप देखो ये फॉल, ये देखो अब आप, है ना। तो बहुत ही मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ से वो टिपिंग पॉइंट आएगा, कहाँ तक जाएगा, उसके बाद उठना स्टार्ट होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। एक ही घंटे में इतना कुछ हो जाता है, एक ही दिन में इतना कुछ हो जा रहा है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप बस देख सकते हो, वेट कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो मार्केट को, क्योंकि इस दौरान मार्केट में सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फेज सरवाइव कर लिया तो मार्केट आपको डेफिनेटली बेटर दिन देगी, रिवॉर्ड देगी। वेट करो, सही मोमेंट का वेट करो जहां से मार्केट उठना
स्टार्ट करें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो लाल वाले जो कैंडल है ना, दे आर डोमिनेटिंग। ये देखो फॉल्स, देखो आप मार्केट में, ये देखो फॉल। क्यों? मैं अभी तक, मैं जो चाहता तो मैं अभी जीरो पे आ गया था, है ना, आज के ट्रेड के हिसाब से, पर मैंने नहीं निकाले पैसे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अभी जाएगा नीचे, भी और नीचे जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा। वेट करेंगे 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 जब तक मार्केट ऐसा बिहेवियर और ऐसा पैटर्न दिखाता रहेगा, हम इंतज़ार करेंगे। देखो, $150 का प्रॉफिट अपन को सीधा सीधा हो गया भाई, किकेश भाई। और हमारे साथ बने हुए हैं यूज़र 764433। ये देखो भाई, सीधा सीधा $150 का प्रॉफिट। अभी जीरो पे आ गया था बीटीसी, बल्कि माइनस में चला गया था मैं। अब देखो आप, ये है ना यार, मुद्दा ये है सारा। ये देखो, ये देखो, क्रिप्टो इज ऑल अबाउट वेटिंग गेम। 50 पीएनएल चला गया था। ईटीएच पे अभी देखो और नीचे जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर आ भी जाएगा फिर नीचे जाएगा। दैट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट। मूड ही ऐसा है। हेलो यूजर 940354, बहुत बहुत स्वागत है। गिव अवे ऑफर का यूटिलाइज नहीं करा है, नीचे ही मेरे भाई, मेरे नीचे डिपॉजिट ऑप्शन है, उसको दबाओ, प्रेस करो, डिपॉजिट करो, वो करो ट्रेड। देखो आपके सामने, देखो 100 $150 कमा लिए 5-10 मिनट के स्पैन में। ठीक है, कुछ नहीं करना, डिपॉजिट करना है 3 या उससे डॉलर, 3 या उससे ज़्यादा डॉलर, नीचे ही डिपॉजिट का ऑप्शन है। मेरी लाइव स्क्रीन के नीचे देखो, राइट बॉटम ऑफ माई ऑफ दिस विंडो, यू विल सी अ डिपॉजिट ऑप्शन ऑफ डिपॉजिट, नो मैटर हाउ मच यू वांट। $3 मिनिमम अमाउंट है, ये भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है मेरे हिसाब से, नॉमिनल अमाउंट ही रखा है, बहुत रीजनेबल अमाउंट है। इतना तो आप अगर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आए तो आप करोगे ही। तो डिपॉजिट करो, 3 करो, 10 करो, 20 करो, $50 करो, $100 करो, जितना करना है करो। पर भाई इस वक्त मार्केट का जो सिचुएशन है बता दूं, बहुत ही बेरिश है। मेरे हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा, यही प्रेडिक्ट करना। सबसे बड़ी बात, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक फ़ायदा आपका बहुत बड़ा होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो भी आप पैसे कमा सकते हो, वही कमा रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, ये देखो, ये रहा मेरे आपके सामने मेरा पीएनएल है भाई, घट रहा है वैसे। कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्केट नीचे ही जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। हेलो यूजर 940354, ये पिछले 10 मिनट में ही कमाए $55, 65। बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और अभी मेरे को चैन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा लालची हो गया हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको $200 तक तो लेके जाऊं, उसके बाद मैं इसे क्लोज करूं ट्रेड को। ठीक है, कोई नहीं होता, कोई नज़र बना के रखेंगे। और आज का दिन ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ के बताऊंगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो कैसे मार्केट को और इफेक्ट कर सकती है, क्या उसकी वजह से भी वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेंगे। क्योंकि भाई देखो, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो भी अपना हैंड प्ले करते हैं इस मार्केट के उतार में, चढ़ाव में उतार में, सॉरी। ठीक है, तो उन पे भी नज़र बनाएंगे। पहले एक बार ये आर्टिकल पढ़ लूँ, इससे क्या कहने का मतलब है। देखिए, जेफरी सीज न्यू few signs of crypto bottom yet flags upside for token with fundamentals. Jeffrey says the latest crypto sell-off shows few signs of an imminent bottom, even as Bitcoin and Ether hover near levels that have historically drawn dip buyers. ये देखो तो भाई, ये कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बॉटम आया है, बहुत दूर है बॉटम से भी।
ये देखो भाई, $200 प्रॉफिट सीधा सीधा। फॉल देखो बस एक बार। $300 के आसपास पहुंच रहा है, ये देखो फॉल देखो आप। इट इज सच अ बेरिश मार्केट राइट नाउ। मैंने 65030 पे एंट्री ली है, देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। धड़ल्ले से गिर रहा है बीटीसी, धड़ल्ले से। क्लोज करेंगे, ट्रेड निकलेंगे अब। चलो भाई, बढ़िया हो गया प्रॉफिट। $250 कमा लिया हमने। लेकिन हम फिर से बिड करेंगे। 64 40 तक जाए।
if you knew who owned Bitcoin or who started Bitcoin, you had Bitcoin, you couldn't sleep at night. I know, 100%. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. One day. And microsecond, like that. तो ऐसे टाइम पे कैसे कैसे स्टेटमेंट्स और आर्टिकल्स और वीडियो सर्कुलेट करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा बॉदरिंग है। काफ़ी एक वो वाला मीम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसमें कह रहे थे अंकल आई कन्विंस्ड टू बाय बिटकॉइन एट 1,26,000 और आज देखो बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, अंकल पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए। तो ये वाले वीडियोस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये मार्केट का इस दौरान हाल ही यही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई बिटकॉइन क्या चीज़ खरीद ली हमने, ये बिटकॉइन बिटकॉइन और ये कहाँ जाके रुकेगा। सो that is how the market is right now, and that is the state of the market. It's so bearish. It's a bearish market. It's a seller dominated market at the moment, and it can make you understand, question things like these. You can sometimes it gets to the point that they even sound funny rather than serious, right? uh, Anyway, I've again gone very bearish on BTC in the last few minutes. आपने देखा होगा, आप मेरे साथ बने हुए थे थोड़ी देर पहले, $250 का प्रॉफिट लेके ट्रेड क्लोज कर दिया। अब देख लो फिर से $25-30 प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अब कम होता जा रहा है, आपको बोलते ही कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एंट्री ली है 720 पे, 64,720 पे। बट अगेन देखो भाई, मार्केट ये हरे जो वो है ना, ये बढ़ता है ना तो सबसे बड़ी बात है कि घटता भी है। वेट करेंगे। मार्केट सेंटिमेंट इस वक्त बेरिश है। मार्केट सेंटिमेंट सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त। तो भाई नीचे गिरेगा ही गिरेगा। कितना बढ़ जाएगा? गिरेगा जब तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। वेट करेंगे, वेट। नेगेटिव में आ गया देखो, बट बढ़ेंगे, कुछ नहीं होता। वी विल वेट। लेट्स रीड दिस न्यूज़ इन द मीन टाइम। थीरम भी देख लेना। 1879 इथीरियम भी ले लें क्या? 1882 पे ले लेते हैं। सिक्सटी फोर 830 तक चला जा बस एक बार।
इथेरियम अभी आया नहीं है क्या? मेरे ऊपर नहीं है। ओके, मैंने प्राइस 1882। 1882 पे आता आता रह गया वो। 1881 तक भी गया आई थिंक। नेवर माइंड। ऑर्डर ओपन ही नहीं हो रहा है। Welcome user 940354 brother to the live stream. I hope you are keeping a close eye on BTC prices and Ethereum prices as well. We are continuously monitoring all these prices, and if you're a new user and if you've not deposited so far, I have a deposit offer as well. तो करना हो deposit तो मुझे एक बार बता देना। दूसरी बात, आज हम हमारा टॉपिक जो है वो बीटीसी का फ्री फॉलिंग नेचर हो गया इस वक्त, वो है टॉपिक। और दूसरा है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसमें भी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो बहुत सर्कुलेट कर रही है इस वक्त। और वो ये है कि यूएस ने अपने सिटीजन्स को जो ईरान में है उन्हें कह दिया है कि भाई निकल दो। अब कभी भी टेंशन जो है एस्केलेट कर सकती हैं वहाँ पे। प्लीज़ एनी वन गिव 1 USD। अरे आप $1 मांग रहे हो यहाँ पर आके यार। डिपॉजिट करो भाई। डिपॉजिट ऑन योर ओन। एंड आई हैव अ डिपॉजिट ऑफर ऑल्सो। वेलकम यूजर 835765, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस गिरती हुई मार्केट में आपका स्वागत है। आई वेलकम यूजर 835765 फ्रॉम नाइजीरिया। यूजर 940354, नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन है, उसको टैप करो, डिपॉजिट करो जितना कर सकते हो, और मेरे से डिपॉजिट ऑफर ले जाओ। पैसा होता तो ट्रेड नहीं करते भाई। ट्रेड करने के लिए भी पैसा चाहिए ही होता है, और $1 से क्या ट्रेड कर लोगे आप? मिनट में लिक्विडेट हो जाते हो। $1 तो भाई पैसा होता तो ट्रेड नहीं। तो थोड़ा सा तो पैसा चाहिए ही होगा ना सर ट्रेड करने के लिए। अगर नहीं है तो वो पैसा तो मत लगाओ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी ईएमआई का पैसा या आपका रेंट का पैसा। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि भाई ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके लिए वो पैसा बहुत कीमती है तो आप उसको कहीं और लगाओ। पैसा होता तो ट्रेड नहीं करते। ये वैसे गलत स्टेटमेंट हो गई आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन पे पैसा है वही ट्रेड कर रहे हैं। सही बात बताऊँ तो।
खैर, जब भी डिपॉजिट करोगे, कभी करोगे तो मेरे पे डिपॉजिट ऑफर है, ले लेना। मेरे तरफ से आपको 20,000 पेपे और 20,000 शिबा इनू में से एक मिलेगा। कुछ नहीं करना, नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन है, उस पर टैप करना है और कहीं डिपॉजिट नहीं करना, उसको टैप करना है और वहां जाके फिर आपको मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू कॉइन्स अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। $3 से ज़्यादा डिपॉजिट करना है आपने, ठीक है भाई। देख लो, बैठे बैठे आज जो हमने $250 का प्रॉफिट कर लिया है और वापस लगा दिया उनको। ये पोजीशन यार मेरी ओपन नहीं हो रही है क्योंकि मैंने ना, अरे भाई साहब ये तो गिरे ही जा रहा है। इसे कैंसिल करो भाई, ये तो जब तक आएगा 1882 पे तो हो नहीं पाएगा। कैंसिल कैंसिल मारो, बेच डालो। वो आपने गोविंदा की पिक्चर देखी है? इसमें वो कहता है बेच डालो। ये मेरे, ये आपके बड़े भाई का कैबिन है, बेच मारो। सही बात है, पर एक पागल यूएसए में है, क्या करे हैं। अच्छा, ट्रम्प की बात कर रहे हो? भाई वो तो ऐसे घुमा रहा है अपने आप को उंगलियों सबको। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि मतलब ट्रम्प जो है वो, ऐसा नहीं है कि ट्रम्प की पॉलिसीज क्रिप्टो के फेवर में नहीं है या कुछ। ट्रम्प की पॉलिसीज भी क्रिप्टो के फेवर में ही हैं और माहौल भी पूरा क्रिप्टो के, अभी मतलब बिल रिफॉर्म्स आने की भी बातें चल रही हैं, क्लैरिटी एक्ट की बातें चल रही हैं। हाँ, अभी उसमें थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बहुत चीजें हैं, लेकिन आने वाला टाइम क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इसकी तरफ सारे इंडिकेशन है ना। और एक प्रो क्रिप्टो आदमी आपका प्रेसिडेंट है ना, जो क्रिप्टो के बारे में अच्छा ही चाहता है ना। कई बार ऐसा होता है कि सरकार ही आपकी फेवर में नहीं है, वो भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस कम रहता है ना। जैसे सरकार फेवर में नहीं है कि कहीं कल को कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या कुछ ना ले आए क्रिप्टो को मॉनिटर करने के लिए, वो भी नहीं है। ये तो सिचुएशन अलग है जहां पे इतने सारे फैक्टर्स कंबाइन होके भी मार्केट जो है वो नीचे ही जा रही है, नीचे ही जा रही है। तो इस बार जो हो रहा है ना मार्केट में, ये कुछ अलग ही हो रहा है ना। तो लेवरेज हट रहा है मार्केट से और बीटीसी एक अपनी असली वैल्यू पे आके शायद रुकेगा और फिर वहां से ऊपर जाएगा। वो कब कितने प्राइस पे आके रुकेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो चलो गिर रहा है गिर रहा है। एक और बात, ट्रम्प का बेटा प्रॉफिट करेगा और कोई नहीं। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, अभी देखो गिर रहा है ना। अभी ये तो इथेरियम पे आ गया मैं, यार इसको खरीदें क्या? 18, एक सेकेंड भाई, मैं बस इसका ट्रेड कर दूं। 18, 79 तक लेते हैं फिर वो ट्रेड खुल जाएगा। चलो करते हैं 1879 पे, फिर करूंगा तो मैं नीचे ही शॉर्ट ही एनीवे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी देखो गिर रही है मार्केट, गिरे जा रही है ना, और गिर भी रही है। और अब एक बार को चलो मान लेते हैं कि एक पॉइंट तक आके रुक जाएगी, उसके बाद फिर साला यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट आ रही है भाई सामने। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो फिर तो और गिरने की संभावना है, क्योंकि क्या होता है ऐसे टाइम पे मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी आती है। लोग जो हैं वो सेफ हेवन एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया। तो मतलब एक तो ये क्रैश हो ही रहा है, ऊपर से वो कॉन्फ्लिक्ट जो है, वॉर जो है ईरान और यूएस की, वो सर पे मंडरा रही है भाई। वो कभी भी हो सकती है। अभी यूएस ने कह दिया है अपने सिटीजन्स को ईरान में, आज ही मैं पढ़ रहा था कि भाई ये देखो, वो न्यूज भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, Here US Iran warning resurfaces ahead of nuclear talks, further pressuring Bitcoin and crypto markets। तो एक तो ये चल रहा है, ऊपर से वो कब शुरू हो जाएगी ये नहीं समझ आ रहा, उसकी वजह से मार्केट फिर और नीचे जाएगी। तो भाई ऐसे टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द मार्केट। एक बार ऐसा लग रहा है कि ये दौर गुजर जाए, उसके बाद हम
मार्केट में बुलिश होना शुरू करें कि हाँ भाई अब सारी चीज़ें हमारे पीछे हैं, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। अभी फ़िलहाल तो वो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है जहाँ पर जाके ये रुकेगा, है ना। ये सबसे बॉदरिंग चीज़ है। अगर वो समझ आ रहा होता तो फिर आदमी फिर भी सोच सकता है कि चल ठीक है यहाँ तक देख लेता हूँ, यहाँ तक भी कहाँ तक देख ले रहा हूँ। कल परसों मेरे से किसी ने सवाल करा, मेरा बहुत ही खास दोस्त है, उसने मेरे से सवाल करा कि भाई शुड वी बाय द डिप। मैंने, और हम पता है कब थे, परसों की बात है, 76,100 200 पे, 76,300 पे ऐसे था बिटकॉइन। मैंने कहा कि भाई सुनो मेरी बात, इस दौरान ये प्रेडिक्ट करना कि ये डिप है, इससे नीचे नहीं जाएगा, ये भी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा भाई थोड़ा वेट करो, अभी और भी मार्केट करतब दिखाई है। भाई साहब अगले दिन 71,000 आ गया बिटकॉइन, आज देखो आप 64,000 आ गया। तो मैंने कहा भाई इस वक्त वेट करना ही सही है, थोड़ा वेट करो, फिर आप बाय करना चाहते हो डिप, अगर स्पॉट ट्रेडिंग करते हो अगर आप तो करो, वरना दूसरा भाई अगर आई थिंक आपका ही कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई। आई थिंक 50-55 के यूएसडीटी जा सकता है बीटीसी। हाँ यार मतलब मुझे भी यही लगता है वैसे, 55 तो जाएगा ही आई थिंक, 54-55, यस। बट अगेन ये आप सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे ऐसा लग रहा है ये, क्योंकि ना जब ये ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट एक बार जब ये एस्केलेट होगी ना, अगर ये खमीनी को वहां से हटा देते हैं भाई, ये बहुत, फिर आप नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि वो इतना अनसर्टेनिटी का दौर होता है। और मैंने देखा है कि अनसर्टेनिटी एक ऐसा फैक्टर है जो मार्केट को ट्रिमेंडसली इफेक्ट करता है। लोगों को नहीं पता कब ये वॉर खत्म होगी, कहीं ऑयल प्राइसेस ना बढ़ जाएं घट जाएं, कुछ नहीं पता होता उस दौरान। तो उस दौरान ना जो भी होता है वो 2x 3x 4x 5x उसका असर पड़ सकता है मार्केट पे। भाई मैंने प्रिडिक्शन देखे हैं, आप तो फिर भी 50-55 कह रहे हो। मैंने प्रिडिक्शन कल देखा है, एक बड़ी कंपनी है, ठीक है मैं भी दिखाता हूँ, स्टिफ स्टिफ क्या नाम है पता नहीं, एस से नाम था, और इट इज अ 136 ईयर ओल्ड फर्म, है ना, 136 साल पुरानी कंपनी है। उन्होंने ये प्रिडिक्ट करा है कि 38,000 तक जाएगा बिटकॉइन, और उन्होंने ऐसे वैसे प्रिडिक्ट नहीं करा है, उन्होंने प्रॉपर चार्ट फॉर्म में, क्योंकि जब जब डिप गया है मार्केट में, डिप आया है इतना मेजर, उन्होंने वो सारे फैक्टर्स का बॉटम पॉइंट देखा। वो बॉटम पॉइंट इस साल का जो स्लाइड है उसके बॉटम पॉइंट पे जब आया तो 38,000 पे पॉइंट कर रहा था। तो 38,000 अगर वो कह रहे हैं, तो अच्छा मैंने $26,000 का भी सुना है कि 26,000 तक आ जाएगा, कोई कह रहा है। हर तरफ से प्रिडिक्शन आ रहे हैं, इतने बेरिश प्रिडिक्शन आ रहे हैं, कहने की हद नहीं। अच्छा जब बुलिश होता है तो भाई तब बुलिश वाले तो ऐसे प्रिडिक्शन आते हैं कि क्या बताऊं। अब आप देखो कि जो बुलिश होते हैं ना लोग गायब हो गए हैं बिल्कुल, कोई भी नहीं दिख रहा जो, भाई मेरे को ये देखो, ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया। ये देखो, स्टिफल प्रिडिक्ट्स बिटकॉइन क्रैश टू 38,000, यस यू रेड इट राइट, है ना। ये तो 38,000 है, मैंने फिर भी 26,000 का भी पढ़ा है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 136 साल पुराना फॉर्म है, ऐसा छोटा मोटा फॉर्म नहीं है। वेलकम यूजर 667-385, में ज़्यादा ही बीटीसी माइन, ईरान में ज़्यादा ही बीटीसी माइनिंग होता है, अगर वॉर हुआ तो जितना माइनिंग किया होगा वो सेल करेगा। वो तो यार लोकली इफेक्ट करेगा मुझे लगता है ईरान को, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली ये बात अफेक्ट करेगी कि दो कंट्रीज की वॉर हो रही है, और उसमें यूएस इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, और ईरान इन्वॉल्व है, वहां पर मेजर चेंजेस आ सकते हैं। लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा, कितना अगली हो सकती है वॉर, है ना। तो एक मिनट रुको, मैं बस एक चीज दिखाना चाहता हूँ इसमें, एक पॉइंट, ये देखो आप, ये देखो बहुत देखने वाली चीज है। ओनू हो डाउन 21@gmail.com, क्या करें भाई आपकी ईमेल आईडी का, पता नहीं क्या कह रहे हैं। दे आर लुकिंग एट स्ट्रेट लाइन drawn across the low points of every major bitcoin crash since 2010, बिटकॉइन स्लम्प। अब ये देखो आप, 93% इन 2011,
84% इन 2015, 83% इन 2018, 76% in 2022. A line connecting those market bottom slopes upward and points to 38,000 as the potential nadir for the current slide. यानी 38,000 पर इनको लग रहा है, ये छोटा मोटा फर्म नहीं है भाई, वही वाली बात है, बहुत बड़े। मैंने वाइल्ड प्रिडिक्शंस देखे हैं, सही बोलूं तो ऊपर जाने के, तो है ना, किसी ने कहा था कि इथीरियम जो है वो $15,000 पहुंच जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, है ना। भाई साहब बकवास, मैं साफ मुंह पे बोल सकता हूँ ऐसे लोगों के, और ये छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े एक बंदे ने कहा था कि ये अभी इथीरियम चल रहा था 3,000 के आसपास मंडरा रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था कि 15,000, कोई तो कह रहा था कितना 10,000 पहुंच जाएगा मार्च में। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वाइल्ड प्रिडिक्शंस करते आ रहे हैं, और बुलिश जब होता है ना मार्केट, तब सब हीरो बन रहे होते हैं। अब जब बेरिश बना है ना, तो ये गायब हैं, ये सारे जो जितने भी बुलिश लोग थे सब गायब, दिख नहीं रहे मार्केट में कहीं पर भी। बड़े बड़े लोग हैं, सीईओज हैं, बिलियनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े, कोई छोटा नहीं है, गायब, सब गायब। किसी को नहीं समझ आ रहा कि कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ रुकेगा। इतना बुलिश ये एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जबरदस्ती का, फेक, कि बीटीसी इतना चल जाएगा, इतना कर देगा, उतना कर देगा। अरे भाई आप थोड़ा कुछ एनालिसिस करके तो बोलो, आप हवाबाजी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो भाई ये जो है मार्केट हमारे सामने है, वो हमें दिख रहा है। हाँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है, इतनी ज़्यादा कमी नहीं है कि मतलब हम इतने गलत हो जाएं जितने आप हो। आप इतने मतलब पढ़ लिख के भी आप लोग ऐसे प्रेडिक्शन मारते हो, को आसपास भी नहीं होता है आपका प्रेडिक्शन। तो ये ऐसे तरह के लोग बहुत हैं। अच्छा ये ही नहीं, ये देखो, ये ईरान यूएस की वार्निंग की वजह से क्या मैटर हुआ है, इसकी वजह से कैसे बिटकॉइन पे फर्क आएगा, ये भी पढ़ूंगा। अभी ये थोड़ी देर में पढ़ूंगा, ब्रेक लूंगा एक, उसके बाद आई विल गेट बैक टू दिस टॉपिक, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी मेरे आज के टॉपिक का पार्ट है। तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। बाय द वे 940354 यूजर 3940,354, वेलकम यूजर 519571, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बात कर रहे हैं ये महान बीटीसी क्रैश के बारे में, द ग्रेट बीटीसी क्रैश, द ग्रेट क्रिप्टो क्रैश के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ईरान यूएस जो वॉर है उसमें एक डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि लोगों ने कहा है कि ईरान यूएस ने कहा है कि ईरान में जो भी हमारे लोग हैं कट लो, भाग लो क्योंकि भाई बम गिरने वाले हैं अब आपके ऊपर से। तो भाई ये भी एक वार्निंग साइन है, तो आप मार्केट में ध्यान दें इसका भी। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं क्या यूजर 940354? रियली नाइस टू हैव यू ऑन द लाइव स्ट्रीम। अगर आपने रिचार्ज करना है, डिपॉजिट करना है तो ज़रूर कर लीजिए, बट नीचे वाले बटन पे ही करिए, मेरे लाइव स्ट्रीम पे रहते मेरे को थोड़ा सा उसका बोनस मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा क्योंकि मैं आप मेरे यूज़र हो जाएंगे, और आपको बेस्ट डिपॉजिट ऑफर जो है वो मेरे को लाने की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। एनीवे तो ऐसा लग रहा है बहुत देर से बोल रहा हूँ, लेकिन वक्त थोड़ा सही हुआ है खैर, एनीवे गला सूख जाता है भाई बोलते बोलते। मैंने 64,752 पे एंट्री लिया है, तब से ये गिर नहीं रहा है। यार उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, एंगेजिंग लग रही होंगी, मैं बोर नहीं कर रहा आपको। मेरा कभी भी मोटिव नहीं रहता कि आप बोर हों। अगर आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे हैं, या आप ये zBit.com लाइव स्ट्रीमिंग पे हैं, कहीं भी हो, मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि मेरे यूज़र बोर ना हो यार, उनको
सुनने में मज़ा आए बातें। ये भी पढ़ेंगे आर्टिकल थोड़ी देर में, एक ब्रेक लूँगा। न्यू ईयर पर ही ट्रम्प बोला पीस चाहिए, उसी दिन शॉर्ट करना चाहिए था, हम लोग ही पागल हैं जो नहीं करे। भाई वही बात है भाई, ट्रम्प कहता है ना जब पीस चाहिए मतलब वॉर आने वाली है एक और। पीस भी भाई बहुत अजीब बंदा है वो यार, वो क्या ही बोले ट्रम्प के बारे में, जितना बोलो कम है। और मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिप्टो मार्केट से ज़्यादा एक ही इंसान और वोलेटाइल है। क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, पर एक ही चीज़ है दुनिया में जो उससे भी ज़्यादा वोलेटाइल है, वो है सर डोनाल्ड ट्रम्प हमारे। क्योंकि उनके जितनी भी ये हरकतें हैं, मे बी दे आर यू नो गुड फॉर हिज ओन कंट्री यूएसए के लिए, बट ये जो बर्ताव उनका रहता है और ये जो यूएस की आदत है ना, ये बिग डैडी बनने की, हर जगह कहीं भी लड़ाई हो रही हो तो यूएस सॉल्व करेगा, है ना। सुपर पावर का देखो भाई, सुपर पावर अभी भी हाल ही में भी आपने देख लिया होगा कि कैसे ये प्रेशराइज कर रहे थे ग्रीनलैंड वाले इशू पे, डोनाल्ड ट्रम्प यूरोपियन यूनियन को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई हमें ग्रीनलैंड चाहिए, आप हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाओ। भाई यूरोपियन यूनियन ने साफ मना कर दिया, इसने ये भी बोला कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, बता दिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे आपके मंसूबों को। उसने कह दिया ठीक है, मत करो, नहीं करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। अल्टीमेटली अब मे बी दे ऑक्यूपाई ग्रीनलैंड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, काफी उसमें भसड़ है डेनमार्क के साथ, और जर्मनी, फ्रांस को कह रहा था कि हम वाइन पे तुम्हारी वो लगा देंगे, टैरिफ लगा भी दिए थे बीच में शायद। इमैनुअल मैक्रोन के मैसेजेस लीक कर दिए थे, बहुत चीजें करता रहता है। पर इसमें इम्पोर्टेंट ये है समझना कि डोनाल्ड ट्रम्प को फिर उनने खैर मना कर दिया ग्रीनलैंड वाले उसमें, और उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो उसने कहा ठीक है नहीं कर रहे सपोर्ट इस बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यूएस जो है याद रखेगा ये सारी चीज़ें। फिर थोड़े दिन पहले, उससे भी थोड़े दिन पहले वेनेजुएला वाला जो कांड हुआ था वो हो गया, उसके बाद अब ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़े ही जा रही है। तो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प की एक ना आदत है हमेशा न्यूज़ में बने रहने की, उनको अटेंशन बहुत पसंद है, और उनको यूएस बार बार सुपर पावर बने रहे, ये दुनिया में दिखाते रहे, बार बार एक नमूना पेश करते रहे दुनिया में, ये उनको पसंद है बहुत ज़्यादा। तो ये वो करते ही आए हैं और कर ही रहे हैं अभी भी कंटिन्यू। ये अब अगर आप वेट करो कि भाई जब ट्रम्प चले जाएं फिर मैं ये है ना क्रिप्टो मार्केट में घुसूंगा या मैं फिर वेट करूंगा, तो ये तो अभी बहुत टाइम है। क्योंकि अगर एक सेक्शन ऑफ पीपल यूएस में ऐसा है जो जो ट्रम्प की हरकतों को या उसकी पॉलिसीज को पसंद नहीं करता है, तो एक सेक्शन ये भी है जो बहुत पसंद करता है। ऑब्वियसली दैट इज व्हाई ही इज कम टू पावर, है ना। जीत के आए हैं कनाडा के भी लाइन में, हाँ हाँ बिल्कुल। कनाडा की तो अच्छे से करके रखते हैं भाई वो, मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, बट कनाडा बगला है, कनाडा को उनको पता है कि कनाडा हमारे वजह से ही चल रहा है, तो वो अब कनाडा का नंबर है अगला। लेकिन वही है ना कि जो ज्यादा ताकत बार बार दिखाता है ना, जिसको दिखाने की जरूरत पड़ रही है, जो ताकतवर होता है ना उसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लोगों को पता है कि ताकतवर है। अच्छा, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है इस दौरान, मैंने ये देखा है कि अ, अपने जो ये जो टैरिफ्स के मामले में, खैर टैरिफ्स भी लगे भी लगे ही हैं, ट्रेड रिलेशंस हमारे अभी डील हाल ही में साइन हो रही है, इसकी बातें चल रही हैं, और यूरोप से भी, यूरोपियन यूनियन से भी एक डील की बात चल रही है, वो भी बहुत मेजर डील होने वाली है और ये भी बहुत अच्छी डील होने वाली है। इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज नहीं करा है, इंडिया ने वेटिंग गेम खेला है इसमें। और पता नहीं, एक तो मोदी जी से भी भाई वो बढ़िया बातें करता है, वो बोलता है कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑल दिस, ही इज़ इन द गुड बुक्स, और जहाँ उनको ऐसी तैसी करनी होती है तो वो भी कर देते हैं। सो ठीक है यार, आई थिंक ग्लोबल ट्रेड जो है ना वो इसी पैटर्न में रहेगा और चलता जाएगा मुझे लगता है।
ट्रम्प ऑब्वियसली एक बहुत बड़े खुद ही में एक वोलेटाइल फैक्टर हैं। अब वो किसका टेक ओवर करते हैं, कनाडा को करते हैं, ग्रीनलैंड को करते हैं, या है ना ईरान को एयर स्ट्राइक्स करते हैं, क्या करते हैं, कुछ कोई कभी नहीं कह सकता। कब करेंगे ये भी कभी नहीं कह सकता, लेकिन ये भी सच ही है खैर कि यूएस ही है। अच्छा, क्रिप्टो के मामले में भी उन्होंने वहाँ पर डावोस में स्पीच दी थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई बहुत ही जल्दी वो एक बिल साइन करने वाले हैं। उस बिल को लेके भी अभी अड़चनें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉइनबेस ने पुल आउट कर दिया उसमें एक मेजर क्लॉज की वजह से। उनको लग रहा है, कॉइनबेस कह रहा है कि भाई खराब बिल आए, इससे बेटर है बिल ही ना आए। तो वो भी उसकी वजह से भी डिले चल रहा है क्लैरिटी एक्ट में, जो बेसिकली आने वाला है बिल। तो क्रिप्टो मार्केट इन सारी चीज़ों से इफेक्ट तो होगा ही होगा। और इस बार स्पेसिफिकली देखा गया है कि क्रिप्टो मार्केट जो है, बीटीसी जो है स्पेशली, वो गोल्ड के वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है ना। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो बीटीसी के भी बढ़ते हैं, गोल्ड के घटते हैं तो बीटीसी के भी घट जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा मामला जो है वो डामाडोल रहा है। तो हिस्टोरिकली जैसे बीटीसी पर मतलब रिएक्ट करते आया है, वैसे नहीं करा है। ये भी बहुत चेंजेस देखने को मिले। अच्छा, उसके अलावा सिल्वर और गोल्ड में भी लास्ट कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिला है, क्योंकि वो भी एक अलग ही कमोडिटीज़ की जो मार्केट है, सेफ हेवन की जो मार्केट है, उसमें भी देखने को मिला है। सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा ना आजकल लोगों को लगता है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईवी गाड़ियों में बहुत यूज़ हो रहा है, और सेमीकंडक्टर्स में यूज़ हो रहा है, मशीनरी में कहीं ना कहीं सिल्वर का यूसेज है। तो इसलिए सिल्वर जो है वो हमेशा मेंटेन करेगा। लेकिन सिल्वर भी ऐसा गिरा है अभी थोड़े दिन पहले, और अभी और गिरने की भी संभावना है। तो इन सारी डिबेट्स के बीच में ना भाई, एक चीज़ है जो कांस्टेंट है, वो गोल्ड ही है। गोल्ड हैज़ कंटिन्यू बीइंग गोल्ड ओवर द इयर्स। एंड अभी थोड़े दिन पहले ना मेरा एक टॉपिक था, बाय द वे। टॉपिक क्या था कि क्या कभी बीटीसी गोल्ड बन सकता है? आपको क्या लगता है? पहले पहले आप ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि उस लाइव सेशन से मैंने क्या सीखा और क्या निकल के आया, और मैंने क्या समझाया लोगों को। वो आपको क्या लगता है कि बीटीसी कभी गोल्ड बन सकता है? यूजर 940354। अरे भाई, कौन हॉर्न मार रहा है भाई? क्या बीटीसी कभी भी गोल्ड बन सकता है? ये बताइए, है मेरा सवाल। यूजर 940354, थैंक यू बने रहने के लिए भाई। आपको क्या लगता है, क्या बीटीसी कभी गोल्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है? एक तो यार ये मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है, बैलेंस ये थोड़ा बीटीसी गिरे तो हम आए लाइन में। ये यही बात है, ट्रम्प 2028 में प्रेसिडेंट। भाई फनी हो आप, वैसे सही बताओ आपकी बातें बढ़िया है, मतलब आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग है। तो भाई बीटीसी कभी भी गोल्ड नहीं बन सकता है, यही निकल के आया था उससे। और ये इसलिए निकल के आया था क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों आया था ये निकल के।
वो इसलिए ये निकल के आया था क्योंकि अ, एक सेकंड बस, एक 2028 में बन जाएगा तो लग जाएगा सब। हाँ सही बात है। मुझे तो नहीं लगता अब ट्रम्प दोबारा बनेगा, लेकिन फिर ना वही वाली बात हो जाती है कि कैंडिडेट कोई बढ़िया निकल के आए तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कोई और कैंडिडेट है ही नहीं सामने जो वो एक तो मोदी जी को देख कितने सालों से रहे हम कि अब ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कितने यू नो फेस होना एक बहुत ज़रूरी है सामने। तो कौन उनके वहाँ पे फेस बन के आएगा वो देखना पड़ेगा, वेदर वो डेमोक्रेट से होगा, रिपब्लिकन पार्टी से होगा, जहाँ से भी होगा। हाँ, खैर तो उससे ये निकल के आया था कि उससे ये निकल के आया था कि बिटकॉइन जो है वो कभी भी गोल्ड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भाई आप देखो तो गोल्ड की ना, भाई देखो बिटकॉइन कब आया, पहले तो बिटकॉइन वाइस प्रेसिडेंट है जो वही महंगे, दोनों का माइंडसेट दूसरा हो तो सही है। हाँ नहीं, फिर तो वो जेम्स विंस, क्या नाम है, जेम्स विंस ही तो है, जेम्स विंस है ना उनके तो। नहीं नहीं यार, जेम्स विंस तो क्रिकेटर है, क्या नाम भूल गया मैं उनके वाइस प्रेसिडेंट का यार। अरे इसका नाम भूल गया हूँ मैं यार, जेडी वैंस। 2008 में बीटीसी आया है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 2008-9 में बीटीसी आया है। आज आप देख लो हम 2026 में बैठे हैं, कितने हो गए, 17-18 साल हो गए है ना। अब आप देखिए कि इस दौरान बीटीसी ने जो देखा है वो देखा है गोल्ड का। अब गोल्ड की हिस्ट्री देखो, गोल्ड कितने साल पहले आया है ये बताओ। गोल्ड की देखो अब आप हिस्ट्री, गोल्ड आया है 5,000 साल पहले, राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है, उससे भी पहले है ना। अब आप देखिए कि बीटीसी ने कुछ नहीं देखा है अभी, मैं सच बोलूँ तो। गोल्ड ने एक ऐसा फेज देखा है, गोल्ड ने इतना, गोल्ड ने वॉर्स देखी हैं, रिसेशन देखा है और मार्केट क्रैशेस देखे हैं, है ना, सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स देखी हैं। क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड जो है वो गोल्ड बन के ही बैठा रहा है। गोल्ड हैज़ सर्वाइव द ऑड्स, गोल्ड हैज़, जिसे कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो गोल्ड हैज़ बीन एबल टू do, and because of that it has earned the reputation that it has over these years. For BTC it is very difficult to obvious, अभी नहीं कर पा रहा है तो क्राइसिस के टाइम पे, अभी अगर आप देखें तो बीटीसी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना कि क्राइसिस के टाइम पे एक कमोडिटी या एक एसेट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। गोल्ड ने टाइम एंड अगेन प्रूफ करा है भाई कि वो गोल्ड है। और ऑन द अदर हैंड बीटीसी को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है भाई गोल्ड बनने के लिए, ये उससे मेरा निकल के आया था। अब यार एक तो मैंने एंट्री 64,752 पे दी है, ठीक है नीचे जाएगा तो ही होगा। तो बस यही है, यही थी बात, बस यही नहीं कहना था मुझे मेन। On this note, I'll be taking a short break. I will be back in the next few minutes. एक शॉर्ट ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, 1.5-2 घंटे हो गए हैं। Stay tuned. I'll be back in the next few minutes. When I come back, I will be keeping a close eye on BTC as well. Stay tuned. I will be right back.
Welcome back to the live stream. We are looking at the price of BTC that has slightly risen in the last few minutes, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लॉस में चला गया हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, वी विल रिकवर दैट लॉस। ये देखो, मार्केट थोड़ा उठता ही उठता चला गया है। भैया ये तो बढ़ते ही जा रहा है। कुछ नहीं होता। लिक्विडेशन प्राइस 66। वेटिंग गेम।
Welcome back to the live stream, guys. We are looking at the price of BTC slightly rising in the last few minutes. Last half an hour or 1 hour or so. It was somewhere around the 64,000 mark. अब बढ़ के थोड़ा 65 66,000 तक आ चुका है और देखने की बात है, अब बढ़ता तो जा ही रहा है। क्या इससे नीचे जाएगा, इससे ऊपर जाएगा मार्केट? हालांकि बेरिश ही कहूंगा मैं है, बट लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। और मार्केट बढ़ा है तो गिरेगा भी, गिरा है तो बढ़ेगा भी। सो जस्ट वेट, लेट्स जस्ट वेट एंड सी। User 876862, welcome to the live stream. We are looking at continuously looking at the price of BTC and ETH as well. I welcome user 876862 to the live stream. BTC has gone to 66,000 in the last few minutes or so. It is, however, now falling slightly. You can see on your screens, but yeah, that's what the topic has been for us. We're looking at this free fall of BTC since the last couple of days or so.
It had fallen down to 60,000 as well. It has now risen a bit. I myself have made a few trades, and my balance, you can see, was in the negative, right? But since this fall, I'm expecting a fall anytime soon. We can then look at the numbers when it comes to BTC and ETH, or Solana for that matter. What happens is that generally when the price of BTC goes up, the price of all commodities goes up along with it, gradually. But when the price of BTC falls, the price of all these commodities, all coins, also comes down with it. This has been the 1 day period. This is the 1 week period, and this is the 1 month period. Officials have, अच्छा ये ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं. Officials have since clarified the warning itself is not new and was first issued in mid-January. Still, the timing matters. The advisory is resurfacing just as the US and Iran prepare to hold nuclear talks in Oman on Friday, with President Donald Trump publicly warning Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei and Tehran threatening retaliation if attacked. For crypto traders, the immediate takeaway is not whether the advisory is fresh, it's that the market is behaving like a fragile leverage macro trade. In this kind of environment, geopolitical headlines tend to hit Bitcoin the same way they hit high beta tech stocks, not the way they hit gold. Bitcoin has already been swinging widely after a week of liquidation driven selling. The market sensitivity is elevated. When positioning is stretched and liquidity is thin, even ambiguous news can trigger rapid deleveraging, especially in perpetual futures. So इस न्यूज़ से ये समझ आ रहा है बेसिकली कि ये जो न्यूज़ आई है रिगार्डिंग ईरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना. Bitcoin has already been swinging widely after a week of liquidation driven selling, and the market sensitivity is elevated. When positioning is stretched and liquidity is thin, even ambiguous news can trigger rapid deleveraging, especially in perpetual futures. The Iran headlines may ultimately fade, especially if the Oman talks proceed smoothly. But in a market that is still digesting heavy losses and where sentiment is already brittle, traders are likely to treat geopolitics as a volatility accelerant rather than a directional catalyst.
से टाइम पे भाई अगर ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो भाई बहुत वरिंग साइन हो जाएगा वो फॉर द मार्केट। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस ये पढ़ो आप एक बार, द ईरान हेडलाइंस में अल्टीमेटली फेड स्पेशली इफ द ओमान टॉक्स प्रोसीड smoothly, but in a market that is still digesting heavy losses and where sentiment is already brittle, traders are likely to treat geopolitics as a volatility accelerant rather than a डायरेक्शनल कैटलिस्ट। तो आज क्या हुआ, बेसिकली न्यूज़ एक फैल गई कि अ, ये जो यूएस ने अपने सिटीजन्स को जो ईरान में है, उनको यूएस ने कह दिया कि हम उनको बुला रहे हैं, आप वापस आ जाओ। दैट काइंड ऑफ सेंट अक्रॉस अ मैसेज कि भाई ऐसा लग रहा है कि जल्दी यूएस ईरान टेंशन एस्केलेट होने वाली है और एयर स्ट्राइक्स हो सकती है, जो भी कुछ हो सकता है। तो यूएस, जबकि न्यूज़ जो है वो पुरानी थी थोड़ी सी, ये रीसरफेस करी है न्यूज़। और इस दौरान क्योंकि मार्केट इतनी सेंसिटिव है, इस वक्त इतनी फ्रेजाइल है, इस दौरान अगर ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट में आती है तो वो और भी ज़्यादा इवन ये भी नहीं देखती फिर वो न्यूज़ की क्या वो फ्रेश न्यूज़ है या नहीं है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रिटल है। तो वो मार्केट को एडवर्सली और भी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, देखते ही देखते बाय द वे बिटकॉइन जो है 66,000 से 67,000 की तरफ, 64,000 से 65,000 आ गया और 65 से अब 66 की तरफ बढ़ता दिख रहा है। मैं थोड़ा आज मार्केट में बेरिश रहा था, तो इसलिए मैं थोड़े लॉस में हूँ। और थोड़े नहीं, अब लॉस बड़ा है, बट इवेंचुअली मार्केट के गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो आई विल वेट एंड आई विल सी हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग and then I will eventually close this trade. I will not close this trade obviously right now because I am in a loss, but I will wait. Sorry. I welcome all of you people who are joined in on YouTube platform as well. I'm sorry. पर अगर आप zbit.com लाइव स्ट्रीम पे जुड़े हुए हैं तो आप जो भी अपना सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल लुक टू आंसर इट एंड देन move towards the next topic, next news. Sorry.
So we will keep track of this Iran US war conflict news as well. There has been another news regarding a Russian high profile General Vladimir Alexiev being shot several times in Moscow, and that news is doing the rounds. US job losses at 17-year high raise. Positive signals for Bitcoin bulls. This is the news that we are looking at. US planned layoffs more than tripled in January to the highest level since 2009, signaling a sharp cooling in the jobs market despite still strong official payroll data.
Private indicators, including challenger layoff figures and a blockchain-based real-time inflation gauge, suggest weakening growth and disinflation that could push the Federal Reserve to cut interest rates. The job market, US job market is cooling fast, a timely blow that could force the Federal Reserve to loosen its purse and potentially put a floor under the price of Bitcoin. Planned layoffs, job cuts that companies have announced but not yet executed, surged by 205%. तो भाई ये एक और फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बिटकॉइन के बुल रन में, जब जाएगा और इवेंचुअली जब वो बुल रन आएगा। अभी तो देखो भाई हाल ये है कुछ इस प्रकार से हाल। और 60,000 तक भी ऑलमोस्ट जा चुका है। अगर आप वन डे पीरियड देखें तो लोएस्ट जो है 59,862 तक जा चुका है ऑलरेडी कल, है ना? ये प्राइस तो दैट इज़ द लोएस्ट इट हैज़ गॉन टू। लास्ट एक दिन में ही गया है, ऐसा नहीं है कि पहले गया है या बाद में गया है, अभी गया है। अच्छा, उसके अलावा आपको मैंने ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट दे दिया था कि ऐसा अभी एक अपडेट आया था जिसमें ये पता चला था कि यूएस ने अपने सिटीजन्स को कह दिया है कि जो भी ईरान में है वो वापस आ जाओ, क्योंकि भाई अब बमबारी होने वाली है और इसीलिए दे आर बीइंग कॉशन। पर वो न्यूज़ जो थी वो पुरानी थी और बट वही बात है कि ऐसे दौरान, ऐसे टाइम पे जहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ब्रिटल है, इतनी ज़्यादा कॉशियस हुई हुई है, कैसे लोग इस दौरान मार्केट से ऐसी न्यूज़ को इफ़ेक्ट ना होने दें, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो सेंसिटिव है मार्केट इस वक़्त, इवन एक गलत खबर में भी इतना कुछ हो जाता है इस दौरान। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखना कि क्या होता है यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में, क्या वो बढ़ती है, घटती है, क्या होगा? I welcome user 353912 to the live stream. If you've just joined on zBit and if you've not made any deposit, kindly go ahead and do so.
Meanwhile, we also have a Telegram group as well where we are constantly sharing information with all of our followers and all of our Telegram users. Uh, Bitcoin is meanwhile back after the dip that it has seen, and we are going to now also look at Ethereum prices as well. We are looking at Ethereum as well, that has fallen to well below 2000 in the last few days, and it's currently trading at in and around the 2000 mark, but it is bound to go even further downwards. We are keeping a close eye on all the numbers. I'm going to add some money into my account as well, and then I'm going to be making a few more trades. The crypto sentiment gauge has gone to the FTX era lows, and that is a worrying sign because that happens when uh, something major is about to happen in the market. It's a systemic event that happens, and it is an indicator that the market is going through a fearful, and it's an index that conveys how sensitive the market is and how the market is not in a it's in a very anyway it's a very sellers dominated market right now, and yeah, we'll just have a look at this article yet again. We've done that already once today, and we'll just look at this because I want to make you understand that it was earlier at 12, yesterday, 16 last week, and 42 last month. Now it is at 9. तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके बताता है कि मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स, मतलब मार्केट में कितना डाउनवर्ड ट्रेंड आया, वोलेटिलिटी आई, कितने लोगों ने पैसा बाहर निकाला, मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है, मूड कैसा है, एंड that is how it calculates this index, and this index has now reached 9. ठीक है, तो अब अच्छा 60 से 65,000 की तरफ भी मार्केट गया है, और 65 से फिर 60,000 भी जब आया था तो मार्केट में फोर्स लिक्विडेशन तो देखने को मिली, और अपॉर्चुनिस्टिक डिप बाइंग भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई डिप आ गया, डिप खरीद लो। पर यही मैं कहना चाहता हूँ कि पता नहीं है कितना नीचे जाएगा, क्या डिप है अभी समझना बहुत मुश्किल है। Also, I what I want to convey through this particular article is that this index does not calculate or tell you which direction the market will be heading towards, but it does show that the market has returned to the kind of fear that was once seen during the FTX crash times. Right, so it is very important that you understand what this index is looking to convey. I'll just be sharing this article once on our Telegram channel as well. I'll share a screenshot of it so that people do get a sense of what this article is all about and why it is important, right? I have my Telegram channel. If you've not joined it, please do join it. And if you've not made any deposit, also please go ahead and make a deposit. If you deposit, I can give you. If you click on the deposit option right below the screen, right below me, on the same window where you are live streaming from, there is a deposit option, right? You tap on it, deposit some money. If you are a first time depositor and you've not made a deposit so far, and if you deposit three or more dollars, I can give you from my side 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe absolutely free of cost, right? Meanwhile, I'll be sharing this on my Telegram.
Right. There is extreme fear in the cryptocurrency market right now, and that is very evident to see because the price of Bitcoin is right in front of you, and it is currently at 65,790. It's come down a bit in the last few minutes, but that is how it is. I welcome user 835765 to the live stream. If you've just joined, I know that you've joined from Nigeria. I hope you're doing fine. It's a beautiful country, and I hope that you've made some kind of deposit. If you've not deposited so far, I do have an offer for you as well. It's a giveaway offer. It's a bonus offer, and by tapping on the link right at the bottom of the screen where it says deposit, you can make a deposit of $3 or more. And once you've done that, just let me know your user IDs. I will give you from my side absolutely free 20,000 Shiba Inu coins or 20,000 Pepe coins. Absolutely free. You don't have to do anything, right? So just go ahead and make a deposit. And the market is right now in a bearish pattern, bearish mood. You can go ahead and make a prediction on the futures trading option on zbit.com. Now, regarding zbit.com, it's a very safe and secure, transparent platform for all of crypto investors and users. Uh, you can do future trading here, and you can make a lot of money. So go ahead, make some predictions, and just let me know once you've made that deposit. Go ahead and make that deposit. How are you doing, my friend from Nigeria? 835765. User 835765. How are you doing? How are you? What do you think of the market? What do you think of the market? I am fine. Very nice to hear that you are fine and you're doing good. Did you invest in any coin? Did you, do futures trading? The market is really falling. It indeed is falling, brother. It is indeed falling. And the predictions are that it might well go to look. I'll show you a prediction. Just wait. Just stay here. I'll show you a prediction, and that is prediction by a very renowned group as well. Stifel is the name of the group, and their prediction is that Bitcoin might go to. Not yet. I haven't invested. All right. Their prediction is that Bitcoin might go to $38,000 as well. Now there are all kinds of predictions in the market. When the market is bearish or when the market is bullish, there are all kinds of predictions. But uh, you know some of them are very wild as well, but we need to understand that the market is right now in a very bearish. And what I often see is that sometimes what it feels is that when the market starts going down, you kind of understand that the market will go even further down, and it feels like
nothing is going right, and it's difficult to make some kind of judgment. But I'll show you the news. This is the news that I was talking about. Stifel predicts Bitcoin crash to $38,000. Yes, you read it right. That's the news. And it's not a random piece of news, because it is coming from a company or a firm that is 136 years old. uh, and they are saying that BTC could crash till 38,000. Now that will be a whole new level of low, right? What do you think, user 835765, all the way from Nigeria? What do you think? I would love to know what your view is. Till what point do you think BTC will come down, and at what point will be the tipping point, and then it will start going upwards, because it's currently at the 66,000 mark. What do you think? What is your perception of things? I would love to know that. Now the Okay, I'll just first wait for your comment. Once you've commented, I'll also let you know if you've invested on any other platform, or any other cryptocurrency coin, or you've done futures trading or not in the past. What is your perception? बढ़िया. User 245609, welcome to the live stream. I've hope that you have made some kind of deposit today, because if you haven't, go ahead. At the bottom of the screen, there is the deposit option. Go ahead, make some deposit, and then you can begin your crypto journey for the day, right? On zbit.com. Go ahead. At the bottom of the screen, just below me, there is the deposit option. Tap on it, make a deposit. If you're a first time investor, and if you've not made deposit at any point of time on zbit.com, and you're investing or depositing for the first time, I can give you from my end 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe absolutely free of cost. So once you made that deposit, and that deposit should be of more than $3, just let me know. I'll be transferring my bonus from my team to your zbit account. Go ahead and make that deposit, and just let me know once you've done that.
भाई मैं अभी रात के Hello, user 245609. Have you deposited at any point of time on zbit.com? Are you a first time depositor? Yes or no? I am waiting for your comment. User 245609, all the way from India. Just let me know if you've made any kind of deposit so far on zbit.com. All right, then. On that note, I'll be taking a short break. When I come back, I will be looking at the latest in the world of cryptocurrency. I'll be telling you the crazy crypto fact of the day as well, and we'll be constantly monitoring the price of BTC as well.
Welcome back to the live stream. I hope that you are keeping a close eye on BTC and Ethereum prices today because the market is in a downwards trend. It is currently going through a bearish mood, bearish pattern, bearish behavior, and let's just look at how different commodities are doing. Where are we in terms of Solana? Where are we in terms of you know uh, XAU? Where are we in terms of Dogecoin, XRP? All these coins, where are they currently placed at? Right. I am still waiting for some. ETH is currently at 1924. We have been keeping a close eye on ETH. It was above 2000 yesterday. It has come up. It has come down, fallen down in the last 24 hours or so. The lowest point that it has gone to is 1739, and this was yesterday. This was still in a 24-hour period. Then just look. Let's just look at XAU. XAU is at 4871. Even it has had a fall. It has gone down till 4651 in the last 1 day or so. But generally, it maintains this point itself. A look at XRP. XRP has fallen a bit. It is in line to go towards the $1 mark, and that $1 mark is because it has also reached a high of you know $3.65 as well when President Donald Trump had come to power in July 2025. It had gone to $3.65, but since then the trend has been falling downwards only. Now it is expected to go to $1 as well. Then let's just look at Solana. Solana is again a falling asset. It is at 81. It was maintaining, I remember, till a few weeks back, 114 as well, right? But the fall has been immense in the last 1 day itself. It has gone till 67 as well. In the last 1 week, the fall has been, the high was at 106. In the last 1 month, the high was at 109. And so all these assets have seen a huge fall. ADA, this has fallen as well. Pump, again, all these assets are showing some kind of fall. Then this is Elon Musk's Dogecoin with every word of his on Twitter about Dogecoin. It tends to go up and or stabilize if it's already down. But this is where Doge is currently at.
All these prices are eventually affected by the price of BTC, and BTC falling has really crippled all these altcoins if you see. Welcome user 753870 to the live stream. I hope that you have invested on zbit.com as a, you know, first time depositor. I can give you an offer that I have with me. It is 20,000 Shiba Inus or 20,000 Pepe, absolutely free. You can get from my side. You don't have to pay anything extra for it. Just have to deposit three or more dollars. This article is so true.
The drop in Bitcoin is not the end of crypto. Bitcoin is down, but far from done.
Bitcoin's plunged to nearly 60,000 on Thursday. A nearly 30% drop over 7 days has got traders on X began floating theories that the sell off was not purely macro or risk off, but various reasons that contributed to the asset's worst single day performance since FTX crashed in 2022. Flood, a prominent crypto trader, called it in an X post the most vicious selling he has seen in years, and said it felt force and indiscriminate, floating possibilities ranging from a sovereign dumping billions to an exchange balance sheet blow up. Mahindra Capital, General large Asia based. But the more unusual narrative emerging from the crash is not about leverage, it is about security. Charles Elwood of KPL argued that falling prices may finally force serious attention on Bitcoin's quantum security risks. Edwards said he was serious when he warned last year that Bitcoin might need to go lower to incentivize meaningful action, calling recent developments the first promising progress he has seen so far. The move has dragged BTC back toward levels last traded in late 2024, while liquidity has looked thin across major venues. With altcoins under heavier pressure and sentiment collapsing to post FTX style readings, traders are now treating each rebound as suspect until flows and positioning visibly reset. So that is the conversation that is being circulated in and around BTC price crash and general crypto market crash. Uh, will this market stabilize a bit in the next few days and then start showing signs of, a bull run, or whether it will dip even more in the next days to come? We will have to see, because that is something that it is very difficult to predict right now, whether the market will go further down or will it look to stabilize a bit. Obviously it won't go on a bull run at this moment. At the moment there can be two possibilities. It can, probably, or maybe three possibilities, one of which can be a 65 to 70,000 jump, and then it could further come down and go towards the 55,000, 50,000 mark, or it could stabilize at around the very same position that is it is right now, 65,000 के आसपास ही, और ग्रेजुअली फिर एक बुल रन आएगा इवेंचुअली लेटर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जब आप बिटकॉइन का राइज देख पाएंगे। तो देखना पड़ेगा क्या रहेगा मार्केट का हाल। We'll wait and see.
Now, I am coming towards the close of my live session as well. I'll be here for the next half an hour. I welcome user 8576649 to the live stream. If you've just joined, today the topic of discussion is the price fall, the free fall of Bitcoin and that of the crypto market. And we are also looking at the Iran US conflict and how it might further impact the market that is already very brittle, very sensitive, very volatile right now. ये आज हमारा आज का टॉपिक है अगर आप नए यूजर हैं इफ यू जॉइनिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडोनेशिया I do have a deposit offer for you. And that deposit offer is that I can give you from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. You don't have to do anything extra. All you have to do is just deposit three or more dollars, right, into your own zBit account. And let me know your user ID. I will give you from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free. We are currently looking at the price of BTC, and this is Ethereum. It was well below 2,000 yesterday. It has fallen to around the 1900 mark in the last few uh, hours, right? In the last day itself, last 24 hours. Uh, we will keep looking at the price of all these altcoins. And if you've not deposited so far on zbit.com, kindly go ahead and do so.
look at what Twitter has to say about Bitcoin, because there is plenty of. So a lot of people are predicting that 38K might just be the final amount till which BTC dips to. A lot of people are expecting that price 38K, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, आई वेलकम यूजर 46667 फ्रॉम इंडिया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उसने बताया था कि बीटीसी जो है वो 38K तक जा सकता है। तो एक प्रेडिक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर साल का जो फॉल देखा गया, जब जब बीटीसी फॉल करा है उन्होंने उसके फॉल को, बॉटम जब जब था उन फॉल्स का, उसको उन्होंने इस साल तक के हिसाब से जब मेजर करा, तो वो बॉटम जो है हमारा 38K तक गया। तो ये एक मेजर मुझे लग रहा है कि 38K के बहुत लोग वेट कर रहे हैं। Having said that, BTC is now at 65,900, maintaining that position, and we'll have to see how this day unfolds. How, whether it falls below 65,000 again, or whether maintains this position, or whether it falls to
60,000. Throughout this live session, my focus has been to talk to you about the free falling price of BTC over the last couple of days or so. And not just that, I've also looked to understand whether the Iran US conflict, there was news obviously regarding the Iran US conflict कि वो यूएस ने अपने सिटीजन्स को वापस बुलाने का वहाँ से डिसीजन बता दिया है। तो वो कैसे हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करेगा। ऑलरेडी मार्केट बहुत ही एक सेंसिटिव फेज से होके गुजर रही है, फ्रेजाइल है इस वक्त। एक रूमर भी गलत डायरेक्शन में हो तो मार्केट में उसका असर देखने को मिल सकता है, काफ़ी लोग उसी की वजह से लिक्विडेट हो सकते हैं। तो अ, अभी इस दौरान यही मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट को बहुत क्लोज़ली वॉच करें और देखें और तभी वेट करें, लिक्विडेट ना हो। डोंट पुट मनी दैट इज़ वेरी डियर टू यू इनटू द मार्केट, बिकॉज़ अभी इस दौरान तो देयर इज़ सो मच रूम दैट बिटकॉइन कैन स्लिप सो मच फर्दर एंड इट कैन राइज़ आल्सो सो मच। देयर इज़ इमेंस रूम इन ईदर डायरेक्शंस। If you have any doubts regarding today's topic, you can go ahead and ask me about the fall of BTC, about the fall of the crypto market in general, whether what is happening, what are the factors that are uh, playing a role in this particular slide of BTC. You can go ahead and ask me if you have any questions regarding it, Iran US war as well, and how it will impact the cryptocurrency market. When it does, you can go ahead and ask that as well. Today we've read about a lot of things. We've read about the fall of BTC, the reasons behind it, how the Iran US conflict is building up, and how it might just start to take the next step. We've also read about various predictions of whether uh, how much BTC will fall and at what point it might just fall, till what point. And we've also read about you know
this volatility fear gauge that has hit you know the same levels as that of the FTX blow up that happened in 2022, and the sentiment and the you know the what do you call it, the crypto greed index, what exactly was it, the fear and greed index is at 9 reading. And although that does not say which direction the market will move towards, it does say that the fear is extremely high in the cryptocurrency market right now. And since that is the case, we've also looked at uh, where a lot of other uh, traders are hoping that things will go to. All these factors eventually, what and how it will affect the market, we have seen all of these things. uh, so yeah, I am at the close towards the closing stages of my live streaming session. I'll be here tomorrow with a newer topic, with an even more interesting topic. Over the weekend, I'll be here on both the days. Not on both the days, I'll be there tomorrow as well. So if you have any questions that you want to ask on the live stream tomorrow, you can do that as well regarding tomorrow's topic, and keep a close eye on what the market is doing as well. It's been a long live session because I had some difficulty earlier when I joined, and it was sorted out. Once it was sorted out, we began with this topic, and we've kept a close eye on BTC as well uh, throughout this period. We will look to keep a close eye on this. If you've not deposited, go ahead and make a deposit on zbit.com. It's a completely safe and secure, transparent platform that allows you to do future and spot trading both. User 972650. If you've just joined and if you've not made a deposit, go ahead and make one. The deposit option is right below me, right below this window, right bottom में है. Deposit करो और अपनी क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत करो zbit.com पे.
If you are joined on the live stream, I would like to tell you that Yash will be here in the next few minutes as well. He himself will have something to bring to you. User 915157, I welcome you to the live stream. Yash will be here in the next few minutes. His topic of the day is quite interesting as well. I'll just let you know his topic as well, because that will again be very fun to watch out. He always has something interesting to bring to you, all of you. His topic is about crypto in extreme fear. What just happened? Bitcoin's price drop to 65K. He'll be also talking about trillions of money being wiped out in the market, and that is going to be his topic of the day. So you can stay tuned. I'll be here for the next 5 6 minutes, and then I'll be heading off. I hope you like my live stream. If you have any more questions, you can go ahead and ask me on YouTube as well as on zbit.com app as well. Both the platforms I'm available. I'm keeping a close eye for you on Ethereum and BTC both.
With that, it looks like BTC is going to come down to less than 66,000 as well. As I come towards the closing stages of my live session, it looks like BTC is well on its way to less than 66,000. All right, I'll take a leave now, and I will be back tomorrow as well at very much the same time. No, tomorrow I'll be here at 5:30 to 9:30 IST. Till then, keep depositing and keep investing only on zbit.com. And I wish you happy investing. Watch out for BTC, and if it falls further, right, keep an eye on it. I'll be back. Until then, take care. Goodbye.